हे एवरीवन वेलकम बैक। आई होप आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी ज़्यादा मैथ्स यूज़ होता है। बट द गुड थिंग इज यू जस्ट नीड टू लर्न इट फॉर द बेसिक्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एआई सिस्टम्स। अगर आप अपना कोई एआई प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं आजकल पाइथन लाइब्रेरीज कर देती हैं आपके लिए। So in this topic, we'll be looking at matrix or matrices as it's a plural. So matrices आपके calculations में use होते हैं। I think आपके क्लास 10th में या मे बी क्लास 11th में आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा यूज़ करना। So at this point, we are going to look at various kind of matrix that are used. What is the arithmetic behind it? What are the various calculations जो आप करते हो उसके साथ? And finally, we will have a quick look at vectors. So now if you're already studying for IIT JEE या फिर अगर आप कोई भी competitive exams के लिए पढ़ रहे हो, you already are very familiar with matrices and they're very important for your exams as well. Now initially you might think that there are too many calculations going on in this video, or maybe matrices में बहुत ज़्यादा mathematics use हो रहा है, but try to think of it as this way. Everything or every thing you look at in the real world can be explained to a computer in the form of numbers. Now आप अपने कंप्यूटर को ये नहीं बोलोगे 1 into 1 plus 0 plus 3 plus 4. It's very complicated, right? बिकॉज आप एक ही यूनिट कंप्यूटर को बता रहे हो एंड उसके साथ आप एक साइन भी बता रहे हो, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो व्हाट हैपेंस इज कंप्यूटर यूजेस समथिंग नोन एज मैट्रिसेस, जहाँ पर आप अपना जो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनको कलेक्ट करते हो एक स्क्वायर के अंदर और एक यूनिट के अंदर, एंड देन यू ट्राई टू पास ऑन दीज यूनिट्स टू द कंप्यूटर, जहाँ पर वो कंप्यूटर यूज़ कर सकता है इनको स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करने के लिए, इमेज रिकग्निशन के लिए, और मे बी डेटा एनालिसिस के लिए. लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ पर आप ये इमेज देख रहे हो. आई होप यू कैन रिमेंबर हु ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. नाउ आई कैन सी that he is Cristiano, you can see is Cristiano, but computer cannot. What computer can however see is these things. Now there are three channels. If you have already studied this in class 10th, if not, you might be studying it for the first time. हर एक इमेज को आप डिफाइन कर सकते हो, और मे बी हर एक कलर इमेज को आप एक RGB चैनल मैट्रिक्स में डिफाइन कर सकते हो. What it means is each image is divided into pixels. Now pixels are of three types: red, green and blue. Now हर एक पिक्सल का एक एक वैल्यू होता है. It ranges from 0 to 255. Now what 0 means is, 0 means is very little red, 255 means very dark red or maroon red. So there is a shade going on, something like this. यहाँ पर हल्का सा रेड है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रेड है, और ज़्यादा रेड, and continuously it goes on. So this is a gradient from 0 to 255. So this grid is represented in the form of numbers, right? अब कंप्यूटर को क्रिस्टियानो नहीं दिख रहा है. what it can only see is these numbers. So if computer wants to do some calculations, or maybe recognize the face here, or maybe recognize the color here, what it needs to do is do some calculations on these numbers. ये जो नंबर है आपको कैलकुलेशन में बहुत इजी कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड यूजिंग मैट्रिक्स और मैट्रिक्स. सो 1850s में ये टर्म कॉइन हुआ था, जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर. नाउ आई थिंक ही वाज अ मैथमेटिशियन. व्हेन इट वाज स्टार्टेड बैक देन, तो कैलकुलेशंस में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी because there were no calculators back then. So in order to jumble up, or in order to collect all your data together, there was something created in a grouping, which we call it as matrix today. Now for example, let's say there is a class. There is class 11th C. Okay. I want to know the details of the student. So how do I collect the data? I say roll number. फिर मैं बोलता हूँ name. Then I say age, right? So there will be roll number 1, name could be A, age could be 16, roll number हो सकता है 2, name is B, age can be 70, roll number 3, name C, age is 16 again. Now
this entire thing can be grouped together and we can understand that कि हर एक रो जो है इस matrix का, it represents a new data value. So this is why matrices are used. For example, if you want to represent this football in the term of matrices, or maybe just a little part of it, you can do that by representing the number of pixels which are present inside it. और हर एक पिक्सल का एक एक वैल्यू होगा, वो आप लिख सकते हो 1 0 और मे बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 255. सो दिस इज वाई मेट्राइसेस आर यूज्ड, बिकॉज आप कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, हो सकता है वो 2D हो सकता है वो 3D हो, that can be represented as numbers, and all of these details can be collected together in the form of a matrix. Enough of matrix. I know it can get complicated in the beginning, but just understand matrices computer को calculation easy करने में help करते हैं. What are the applications of the matrix? Every game you see out there, every new game, for example नई GTA 6 आ रही है, I hope they release it soon, but it's a long way out. But every game that you see, or every 3D game that you actually see जिसमें आपका real life component है, वहाँ पर आप matrix multiplication use करते हो, matrix के ऊपर आप operations करते हो. Because real life में भी there are some rules, there are some physical rules present, right? There is Pythagoras theorem which tells us कि distance and height is related, correct? और यहाँ पर अगर जो एंगल बन रहा है वो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड. सो यहाँ पर जो नंबर्स के बीच में एक रिलेशन है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड दिस मैट्रिक्स is also what is used within your games. So not only your 3D games, it is also used in your security. It is also used in predicting some business models or creating some financial models. So I think this is getting hidden. So business models, and in computer vision they're actually very necessary because all your pixels are represented by numbers, right? बट एक इमेज में बहुत सारे मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं. सो आप उन मिलियंस ऑफ पिक्सल्स को कलेक्ट करते हो टुगेदर एंड यू रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. सो इफ यू नॉट ऑलरेडी स्टडिंग मैट्रिक्स इन योर मैथमेटिक्स, देयर आर मल्टीपल टाइप्स. एक होता है रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो होगी. एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम होगा. नाउ हाउ आर मैट्रिक्स डिफाइंड? We say that matrix is a collection of numbers which has two dimensions. So this dimension and this dimension. इसमें ये जो चीजें हैं, the vertical objects, they are called columns. Now you would say class में तो rows बोलते हैं, your teacher asks the entire row to stand up. So that is a wrong notation. जो ये straight vertical collection है, इसको हम लोग columns बोलते हैं. Whereas these horizontal collections, they are called rows. Now every matrix can have n number of columns and m number of rows. वो आपके ऊपर depend करता है आप कौन सा matrix use कर रहे हो, right? So there are various kind of matrices available. Matrices available. There can be a row matrix, there can be a column matrix, there can be a zero matrix, जहाँ पर इसके सारे जो elements हैं ये सब हैं zero. But for your mathematics purpose, for your AI purpose, the most important kind of matrix that you will come across is the row matrix, the column matrix, and the unit matrix. Unit matrix क्या होता है? जिसमें आपके सारे जो diagonal elements हैं वो सब नॉन जीरो हैं, whereas rest of the elements are zero. So यहाँ पर अगर आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर 1 हो जाए तो उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं. बट अगर वो जो एलिमेंट्स 1 नहीं होंगे, दे कैन बी एनी अदर नंबर, सो हम लोग उस टाइम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स.
सो वंस वी नो, वी अंडरस्टैंड कि मैट्रिक्स आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज़ हो रहे हैं, आपके कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, आपके गेम्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन आपके मैट्रिक्स यूज़ कर रहा है. सो देर आर सर्टेन काइंड ऑफ ऑपरेशंस जो आप देखोगे. सो देर आर 3 इन टोटल: ट्रांसपोज, इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट. फर्स्ट लेट्स लुक एट ट्रांसपोज. ट्रांसपोज क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स अवेलेबल है लाइक दिस 1 2 3 4 and 5 6, what do? You try to inverse or flip the rows and columns. So if I say अगर मैंने मैट्रिक्स A को ट्रांसपोज किया है, it would mean कि मैंने rows and columns को interchange कर दिया, which means my new rows and columns would be 1 2 3 4 and 5 6. How so? So ये जो मेरा रो था, it becomes the new column. ये जो मेरा रो था, it becomes another column. And ये जो मेरा रो था, it becomes another column. So this is called the transpose of a matrix. इन मैट्रिक्स ऑपरेशंस हम लोग सब चीज़ें कर सकते हैं. हम लोग एडिशन कर सकते हैं, आगे देखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एंड हम लोग ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. बट वन थिंग वी कैन नॉट डू इन matrices is we cannot divide. Why? Because for that purpose we need to start by dividing by a matrix, and this function is not defined. But in order to do something similar, हम लोग उसको invert करते हैं. So inversion में हम लोग अपने matrice को invert करते हैं. What does it mean? It means, for example, if I have a matrix A and if I want to find the inverse of this matrix, it would mean कि let's say कि inverse of A is B. So it would mean अगर मैंने A को उसके inverse से multiply किया, that is B, so I should get a diagonal matrix or an identity matrix. What is an identity matrix? It is again a diagonal matrix जिसके जो middle elements हैं वो 1 है and rest of the elements are 0. यहाँ पर n denotes a square matrix, means कितने elements हैं on each of the side. Okay, so B would be defined as something as A inverse. So इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, but just remember that in order to calculate the inverse of a matrix, this is how it is defined. Now determinant means you are calculating the value of a matrix. How so? Let's imagine you have a matrix A जिसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं. So what do you try to do? You try to cross multiply. आप cross multiply करोगे 5 into 8 minus 4 into 6. Why minus? Because it is how determinants are defined. And finally you get a number which is 16. So we can say for A matrix 5 4 6 8, इसका जो determinant है which is A mod is 16. It can also happen कि आपके पास 2 cross 2 matrix नहीं है, आपके पास 3 cross 3 matrix है. 3 cross 3 matrix को अगर आपको calculate करना है, so again you follow the same procedure. What do? You take this number, you write it down, and you neglect these rows and these columns. You say minus 2 into 7. Again how it is defined, minus हम लोग साइन बीच में लेते हैं, 5 into 9. Right, so this is T1. What is T2? T2 would be again taking this the middle term. Once we are done with the 6, next part is of 1. So हम लोग 1 लेते हैं, but we just do not take it as 1. यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम लोग माइनस लेंगे. Then again we do the same thing. We try to ignore this and we try to ignore this. 4 into 7 minus 5 into 2. Then again T3, यहाँ पर प्लस आएगा because it is alternating. It should be 1.
देन अगेन हम लोग ये दोनों रोज निगलेक्ट करेंगे. 4 into 9 minus 2 into 2. Now again too much of calculation, but I think pause this video, आप ट्राई करो सॉल्व करने का, and it's very easy. Finding the determinant means you're trying to find out the value of a matrix. So matrix operations जब हम लोग करते हैं, that means हम लोग matrix को किसी और external number के साथ multiply ना करें. But when we are looking at matrix arithmetic, हम लोग matrix 1 and matrix 2 or maybe matrix 3 इनके बीच में arithmetic कर रहे हैं. Maybe it can be multiplication, it can be addition, or it can be subtraction. So let's see how it is done. So addition of matrices आप कर सकते हो matrices में, but please remember उनका जो rows और columns हैं, for example m cross n plus m2 cross n2, they should be similar. m1 should be similar to m2 and n1 should be equal to n2, which means इसकी जो dimensions हैं और जो size है, कोई भी matrix arithmetic करने के लिए दोनों matrix को similar होना पड़ेगा in terms of dimensions. For example, if we are using 3 cross 4 matrix, so उनके addition के लिए हम लोग को same matrix use करना पड़ेगा. If we are using a 2 cross 2 matrix, then in order to add two matrices, the dimensions need to be similar. You can also multiply a matrix by a scalar. For example, if I have a matrix 8 1 5 4, so this is a matrix A. What do you mean by 3A? 3A just means कि मैं हर एक element को 3 से multiply कर रहा हूँ, and the final value would be 24, 3, 15 and 12. So this is how you multiply by a scalar. Scalar means a single value. Next up is multiplying the matrices themselves. So this is also known as element wise matrix multiplication. इसमें भी आपका जो दो sizes हैं वो same होने चाहिए, and it is done by multiplying the elements element wise. जैसे हम लोगों ने 1 को उसके corresponding element के साथ multiply किया, then we added it by multiplying the two elements of the corresponding row. Let's try to solve it. So I have a matrix like this. So what I will try to do is multiply the row with the column. So which means 1 into 5 plus 2 into 7. So this should be my first term. Next one would be 1 into 2 multiplied by 6, 8. So 1 into 6 plus 2 into 8. Similarly, you can do it for the next of the rows and columns. So this is how matrix multiplication is done, also known as element-wise matrix multiplication. So once we are done with all the matrices, there are some special kind of matrices जो सिर्फ one dimension में होते हैं. What is one dimensional matrix? It can be either just a column matrix or just a row matrix like this. So why are they used? They are generally used जब हम लोग के पास एक direction हो. So what is this direction? It generally is used in computer vision. It helps in calculations. And not only computer vision, it also is used in 3D geometry. A vector can also be thought of as a line from the origin of the vector space with the direction. For example, if I have a vector, let's take an example of this 2 minus 8 comma 7. So this is our matrix. This is our vector. Okay, 2 minus 8, 7. So let's try to plot it in 3 dimensions. X, Y, Z, 3 dimensions हो गई हमारी. So first dimension is 2 somewhere here
on this plane, then y is -8, so नेगेटिव में आएगा यहाँ पर -8 इस पॉइंट में यहाँ पर कहीं पे, and 7, so this is in this plane on this line कहीं पर. So what you can say is that your vector is representing a value somewhere outside of this plane at this point, which is 2 -8 7. Now this is a lot of mathematics, but for your artificial intelligence I think this would be a good introduction to matrices. Vector addition is same as you do in matrices. आपकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, and it is also done correspondingly, right? 10 plus 1 11, 20 plus 2 22. हर एक एलिमेंट को उसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड किया जाता है, उसके साथ सब्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स मिले. एंड सिमिलरली डिविजन भी कर सकते हो आप. यस, वेक्टर डिविजन इज पॉसिबल. इट इज डन नेचुरली लाइक आपका जो नॉर्मल अरिथमेटिक होता है, एंड योर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो डन correspondingly. So no new things there, just that you need to remember कि एक vector जो है it is a 1D matrix. Alright, so with this we have finished the chapter of matrix. It was a bit complicated, but if you give it some time you would understand why matrices are used, because computer needs to do a lot of calculations. That's why matrices were invented, and it has made things very easy since then. So I hope this video made some things easier for you as well. Please do not forget to like the video so that the future batch of class 11 can also refer to this video. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.